हेलो व्यूवर्स, हम वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग ग्लैम और आज हम आपको सिखाएंगे ब्राउनी बनाना। सो मेरा नाम है आर्यन और इसका नाम है महद। सो लेट्स बिगिन। सो पहले तो सबसे पहले हमने आइसिंग शुगर डालेंगे 2 टेबलस्पून और फिर हमने कोको पाउडर डालना है 1 टेबलस्पून टेबल और फिर बेकिंग पाउडर 3 टेबलस्पून और फिर ये बेकिंग पाउडर और मैदा डाल देंगे। ये मैदा आधा ये बेकिंग पाउडर चम्मच सॉरी 3 चम्मच मैदा और फिर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के हमने नमक मिला दिया अंदर और फिर से अच्छे से मिक्स करना। बेकिंग पाउडर के अंदर हमने नमक डाल दिया, तो आप अलग से डालना चाहते हैं वो भी डाल दें या फिर डाल दें। एंड आधा टेबलस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स वेल। फिर हम वनीला एसेंस डालेंगे 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून दूध 1 पिंच 2 टेबलस्पून दूध। महद ने वनीला एसेंस तो डाला ही नहीं, डाल देते हैं वनीला एसेंस और फिर 2 टेबलस्पून मिल्क डाल देंगे, आधा चम्मच। मिक्स इट वेल और फिर से अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे। फिर हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे 1 टेबलस्पून। वन टेबलस्पून क्रीम डालनी है। सो अब इसके बाद ऑयल डाल देंगे 2 टेबलस्पून। और फिर ऑयल डालना है और इन्हें हम माइक्रोवेव से बनाएंगे, इन्हें चूल्हे पे नहीं बनाएंगे। सो मिक्स इट वेल नाउ। We have mixed it well. So before we put it in the microwave, we will put the chocolate chip and walnuts in it. And you can add much as you want. Now we will put it in the microwave for 1 minute. Now when we put it in the microwave, we will set the timer 1 minute. Our mug brownie is ready. So अब इन्हें निकालेंगे। They look so tasty. And now we will put some chocolate on them and we will show you how to make this chocolate syrup in another video.
We will So- show you how to make this chocolate syrup in our this video's part 2. And now, Now let's let's taste them. taste it. It is so yummy. It is so yummy. Please try making this at your home. Bye. And if you like this video, So like, subscribe, share and comment. bye. Bye.